Morning students, today we are going to study about the finding of the formulae of the different compounds for the different arrangement of the atoms. Okay, तो जनरली इसमें जो लैटिस यूज करते हैं वो FCC, CCP एंड SCP. ओके, कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है पहले. ओके, तो समटाइम्स ये दे रखे हैं जैसे A, B, C टाइप्स के एटम्स हैं, दे आर फॉर्मिंग सम फॉर्मूला. ओके, नाउ द फॉर्मूला किस तरीके से अरेंज किया जाता है कि सपोज यहाँ पे जो ये बोल दिया जाता है कि एटम्स ऑफ B इज फॉर्मिंग द FCC लैटिस या CCP लैटिस या SCP लैटिस. ओके, it means it is saying about the total number of atoms present in the unit cell. Okay, and sometimes it says about suppose it says about A ke it occupies 1/3 of the tetrahedral words. Okay, so then we have to take the tetrahedral words, and sometimes it says that it occupies all the octahedral words or all the some part of the octahedral words are occupied by C. Okay, so first of all इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि first of all we should know the ratio of the total number of atoms present in unit cell and the octahedral words and the tetrahedral words. Okay, so whether FCC, CCP और SCP, पहले हम इन दो की बात करते हैं FCC और CCP, because the number of atoms present in both these is 4. Okay, so number of atoms हम लें, number of atoms this is 4. Okay, and we also know that the number of octahedral words is equal to the number of atoms. Okay, so number of octahedral words this is also 4. Okay, and we also know that the number of tetrahedral words are double of the number of octahedral words, or you can say the double of the number of atoms present in unit cell. Okay, and we very well know that the tetrahedral words are present at each body diagonal, 2 at each body diagonal. So in FCC, CCP इनमें 4 body diagonals हैं, that's why the number of tetrahedral words is 8. Okay, so ratio comes 1:2. Okay, is it very clear? जब हमें नंबर ऑफ एटम्स की बात करनी है तो हम इस रेशो को यूज करेंगे, अदरवाइज इन जनरल वी विल यूज दिस फॉर्मूला. जहां भी हम नंबर ऑफ एटम्स की बात आएगी या फॉर्मिंग द CCP लैटिस, जब भी लैटिस की बात करता है या FCC लैटिस की बात करता है या एरे की बात करता है, फॉर्मिंग द CCP एरे, इट मीन्स इट इज सेइंग अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स, सो वी विल यूज 1 एट दैट टाइम. एंड octahedral वर्ड्स की बात करता है तो वी विल अगेन यूज 1, एंड द tetrahedral वर्ड्स विल बी द डबल ऑफ दिस वन. ओके, द सेम थिंग हैपन फॉर द SCP आल्सो. जब हमें रेशो लेना तो रेशो अगेन कम्स द सेम. ओके, because the number of atoms present in SCP is 6, the number of octahedral words is equal to the number of atoms, that's why it is 6. Okay, and the number of octahedral words this is 6:6:12, so again this comes 1:1:2. is it clear? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, और फिर जस्ट हमें उसको पहले व्हाट एवर गिवन इन द क्वेश्चन उसके हिसाब से हमें रेशो निकालना है और उसको सिंपलेट रेशो में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन हैव द फॉर्मूला. ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड in which the element Y forms CCP lattice, means
Y फॉर्म CCP लैटिस। अभी हम इसको क्रूड वे में इसकी इंफॉर्मेशन से लिख लेते हैं। इन एटम्स ऑफ X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एटम्स ऑफ X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इज इट क्लियर? तो now we have to find out the formula. Okay, so CCP lattice means it is saying about the number of atoms present in unit cell. Okay, and tetrahedral word, this will be the double, and so in place of CCP lattice हम 1 यूज करेंगे और tetrahedral words की जगह हम 2 यूज करेंगे। So I am going to find out the ratio of X is to Y. X is equal to 1/3 tetrahedral words, क्योंकि रेशो में इसके 1:1:2 आता है, तो I am writing 2 is to Y. CCP lattice means I will write 1. So simple ratio will be 2:3. Is it clear? So this will give us X2 by 3. This will be the formula of the compound. Is it clear? Now we take another example. It says, what is the formula of a compound in which element Y forms CCP lattice? Again, Y is forming the CCP lattice. CCP lattice. And atoms of X occupy 2/3 of the tetrahedral voids. X occupy 2/3 of tetrahedral voids. So again, it is very simple question. So X is to Y is equal to X 2/3. In place of tetrahedral words we will use 2, and CCP lattice means number of atoms, so this will be 1. On simplifying, this will be 4:3. So the formula will be X4Y3. Clear? Now we take another example. A compound is formed by 2 elements X and Y. Atoms of element X make CCP. Atoms of the element Y. Y जो anions हैं, they are making the CCP lattice. And X occupy all the octahedral voids. X occupy all the octahedral voids. Okay. Now we have to find out the formula. So this is anion, so this will come later. So we will write the ratio X is to Y. In place of octahedral voids, we will use 1. And in place of CCP lattice means the number of atoms, this is also 1. So X is to Y is 1:1. So the formula of the compound will be XY. Okay. Another question. Atoms of element B forms SCP lattice. Atoms of element B is forming SCP lattice. And those of element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. A occupy 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by A and B? Okay. So it is very simple.
तो A:B, A:B 2/3 SCP लैटिस हमने बताया नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तब 6 एटम्स होंगे, लेकिन जब रेशो की बात करेंगे तो अगेन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, इट कम्स 1:1:2. So in SCP lattice we will again use 1. Okay, 2/3 of tetrahedral bonds means 2/3 into 2 is to SCP lattice we will use 1. So this is 4/3:1 or this will give 4:3. So the formula will be A4B3. Is it clear? बहुत सिंपल सी चीज है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं। और देखते हैं एक we take one more example also. A cubic solid is made of two elements P and Q. क्या है? Two elements P and Q. Atoms of Q are at the corners. Q कहाँ पर है? Q corners पर है। Corners of the cube and P is at the body center. P is at body center. ठीक है। What is the formula of the compound? Okay. तो कंपाउंड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स और उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। Q is placed at all corners. All corners of a cube means 8 corners are there. So its contribution towards one unit cell we very well know. 8 atoms of Q. Okay. Its contribution towards one unit cell is 1, and P is placed at the body center, so its contribution is 1. So the ratio of P and Q is 1:1. So the formula will be PQ. Is it clear? तो इस तरीके से हम डिफरेंट कंपाउंड्स के क्या है फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू।